Yep, brilliant. Thank you so much for that. Okay. I don't know if we've got any students from other courses as well, or if we've got any new courses, new students with us. So just to let you know, my name is Mrs. Reema Zafar, and I teach content writing, essay writing, fluent communication, all those things in the Digital Era Center. I've got lots and lots of my students here. It's great to see you all. Thank you so much for joining. So without further ado, we are going to start today's session. Okay, so the first thing is I'm going to just talk you through what the objectives here are. In this session today, we are going to look at different aspects of interview, how you can prepare for them. Okay, so first, we need to know the importance of English language, because way back, depends what area of job you're going for, jo field aapki hai, jo niche aapki hai, whether you're working as a freelancer. So depending on that, her aspect mein, her area mein, you will find this communication skill really, really helpful. So, that's why we have practiced with our students for so long, for, and emphasized upon this, that, you need English language, you need that fluency, you need that confidence, and it's crucial to demonstrate that you are the right person for the job. It's crucial to persuade your clients or persuade your employers. So it will come in handy wherever you go. So we are going to look at those aspects. We'll talk through some practicalities. Then we are going to see how we can deal with the, the nervousness that comes with just the word interview in mind. So usko consider karenge, thoda sa we'll talk about that. Okay, so main thing jo sabko hota hai ki, kya questions puche jayenge, how are we going to answer them, what would be the right answer, and things like that. Again, what if mujhse question kiya and I'm not even able to answer them? Okay, what if I fumble, what if I mumble, what if I stumble, all those things. Well, we are going to talk about those. Last but not the least, like, what questions should you ask them as well? Because people really like that, employers really like that. So we are going to go through that as well. First things first, importance of English language. Of course, I don't think I need to emphasize how much important it is, because it is a transferable soft skill. ठीक है, so आप जहाँ भी जाते हैं अपने साथ लेकर जाते हैं, जिस जॉब में जाते हैं वहाँ पर आपके साथ ट्रांसफर होती है, चाहे आप एवरीडे लाइफ की बात करें या सोशल लाइफ की बात करें, ठीक है, हर जगह पे you will find it really helpful. You'll find it कि आप अपने अगर आप घर में बड़े हैं, आपके पास बाकी बहन भाई हैं छोटे, और if you are a parent, you've got kids, तो आप उनको तक ये ट्रांसफर कर सकते हैं. So it's a soft skill which will come in handy, everywhere. Because it becomes a part of who you are, it becomes a part of your personality, it becomes a part of your style. इस वजह से जहाँ आप हैं वहाँ आपकी personality आपके साथ है, ठीक है. इसके अलावा it adds value to your CV or resume, whichever you want to call it. So yeah, it adds value as well. आप बता सकते हैं that this is something that you're comfortable, you're confident with your English communication. So that's something you don't find as a hurdle आपके clients से बात करने में and negotiations करने में. So just to list a few, you'll find it helpful job interviews में, of course, ठीक है, because it's not just written on the paper कि आपको इंग्लिश आ जाती है. आप वहाँ पे खुद से जब बात करते हैं, जो चीज़ आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, ये वो स्किल है जो आप स्ट्रेट अवे, उसने अभी जॉब दी नहीं दी, स्ट्रेट अवे एटलीस्ट डिलीवर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई खाली हमने लिख नहीं दिया CV पे, we actually do have these qualities, we do have these skills. So it adds that trustworthiness as well कि अगर आप बोल रहे हैं बाकी चीजें भी अपने CV में अपने बारे में, that means कि वो भी of course आपको skills आती होंगी, just like you've written you're fluent in English, तो आपने लिखा है और आप बता रहे हैं, demonstrate कर रहे हैं. So it adds that trustworthiness as well. In terms of freelancing, बहुत से clients जो especially international clients हैं, UK based जो कि जिनको मैं भी जानती हूँ, उनका भी यही कहना है कि जब
because बहुत सारे scams वगैरह होते हैं, so they prefer talking to the freelancer जिससे वो services purchase करना चाह रहे हैं, just to understand who they are, understand their level of skill as well, और ये भी समझना कि अगर उनको एक बंदा बार बार जिस बंदे की जरूरत पड़ेगी, if they want to become your permanent client, तो वो चाहते हैं कि बात करें, पता चले क्या हमारी इस बंदे के साथ अच्छे से बातचीत बन सकती है कि नहीं, if you can create those build those work life relationships with them, ताकि जो है long term हम लोग उन्हीं से काम करवाते रहे, उन्हें हमारे प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता हो, and things like that. So they want to evaluate and assess you at the same time. So वो कोशिश करते हैं कि फोन कॉल पे Zoom meetings में इस तरीके से थोड़ी बातचीत करके आपको थोड़ा जान सकें, पहचान सकें. So that again is really important freelancing के अंदर, कि अगर आप वो communication bridge को जब नहीं बिल्ड कर पाएंगे, then of course बाकी की चीजें तो literally बहुत बाद में आती हैं. So yeah, it's really really important again. Business communication, corporate world, of course वही बात है कि international clients हैं, नहीं है, even अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में काम करें, again कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है, चाहे written form में, चाहे verbal form में, कहीं ना कहीं आपको business communication में भी English की जरूरत पड़ेगी. Whether you're dealing with clients, whether you're making negotiations, again, networking, building relationships, it's all part of, your work routine, you could say. It all comes within your business communication, and it's super, super crucial for you to understand what your client's asking you for and what you need to deliver them. So again, it becomes a part of your work, social and personal life as well. Okay, so we are going to say what some of the practicalities are. Of course, a few things we need to keep in mind is just be prepared for an interview like you would prepare for any other event. So you need to, of course, dress to impress. You need to be in a appropriate attire for your job interview. Some things are not too flashy, some things a bit modern at the same time, so you don't look like you're from an old era or something like that. So you do want to come across as someone, it also depends upon the type of work you're doing, what field you're going for, but a good professional attire is always a win-win. So try to do that. Plan your route ahead, like how you're going to get there. Try to arrive before about 15 minutes kaha jata hai, jo ki experts bhi suggest karte hain ki you need to, if you want to make a good impression, arrive 15 minutes before your interview time. So it just gives them this you could say image that you are very punctual, and you want to prove that you're punctual, you know how to organize, you are keeping time, you're good with planning. So it's early arrive when I say, you can say you are demonstrating a lot of other skills and aspects of your personality as well. Okay, so you definitely don't want to miss this chance. So plan your route ahead is really really important. Do your revision. इससे मतलब है कि जो भी आपने previous research करी हुई है company के ऊपर, organization के ऊपर, उन सबको देखना, ठीक है. इसके अलावा जो है अगर revision की बात करें तो you have to read जो आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है, जो आपने अपनी CV में लिखा है, ठीक है, जो कवर लेटर में लिखा है, कोई ऐसी स्टार्ट्स, कोई रिपोर्ट्स आपको मिली थी, कोई फाइंडिंग्स जो आपके पास थी. सो यू वांट टू रिवाइज वन मोर टाइम, बिकॉज जो आप वहाँ बैठ के रूम में बोलें, इट शुड मैच विद व्हाट यू रिटन ऑन द पेपर. ये ना हो कि पेपर में कुछ लिखा है, आप वहाँ पे जो है गड़बड़ा के कुछ और बोल दें. सो इट वोंट गो अलोंग, और इमेज ये क्रिएट हो जाएगा बहुत नेगेटिव वाला कि आप या तो झूठ बोल रहे हैं, या आपने जहाँ CV में जो लिखा है वो बस जॉब लेने के लिए झूठ लिखा था. सो इट कंप्लीटली रूइंस योर चांस of getting a job, at that organization. Okay, so now the next, sorry, did I miss something here? Oh yes, just let me give you and elaborate this thing as well. अगर अपने पास note करना चाहते हैं, मैं एक दफा repeat कर देती हूँ before I move ahead. Sorry, just skipped out of my head. कि क्या क्या जो है आपने revision में चीजें लिखनी है. Just I'm saying कि अगर आप उन पास note down करना चाहते हैं तो कर लें kindly. Of course, अगर कोई job application आपने send की थी online को, your CV, cover letter, company की कोई history या stat reports आपके पास हैं वो,
ठीक है। यू ऑल्सो वांट टू फाइंड आउट अबाउट क्या सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं जिससे वो कंपनी डील करती है, या उनकी क्या सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा उनकी वेबसाइट पे जाकर आप स्टडी कर रहे हैं कि उनके एम्स क्या हैं, उनके वैल्यूज क्या हैं, उनके मिशन स्टेटमेंट क्या है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ें आपको पता हो, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस वो लोग इसी के अराउंड पूछेंगे। व्हेन वी गो फर्दर ऑन विद आवर सेशन यू विल फाइंड आउट कि क्यों मैं ये सब कह रही हूँ कि आपने प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, इसके अलावा यू नीड टू फाइंड आउट कि उनके क्लाइंट्स कौन है, या उनके कस्टमर्स जो हैं वो कौन होते हैं। अगर उनके किसी के साथ कोई पार्टनरशिप्स वगैरह हैं तो किस किस के साथ पार्टनरशिप्स हैं, और फिर उनके पार्टनर्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत स्टडी करना है, इफ यू कैन फाइंड एनी इंफॉर्मेशन कि किस किस्म की पार्टनरशिप है एंड ऑल दैट। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि उसको भी इन डेप्थ पढ़ा जाए, स्टडी किया जाए। इसके अलावा एनी कंपेटिटर्स दे माइट हैव, ठीक है, जो उनको लगता है कि उनके लिए थ्रेट्स से कंपेटिटर्स हो सकते हैं, यू नीड टू फाइंड आउट दोस एज वेल। अगर वो किसी रिसेंटली न्यूज़ या आर्टिकल किसी पब्लिकेशन में कहीं पे भी फीचर्ड हुए हैं, ठीक है, और उनके बारे में कोई भी न्यू आई ऑन आइदर सोशल मीडिया, टीवी एडवर्ट्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, कुछ भी anything new and latest you can find out about them, it's really crucial कि आपको ये चीजें पता हो, because they will ask questions इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, सो आपके बारे में तो करेंगे ही, सो आपने अपना रिविजन भी करना है, और जो आपने उनके बारे में चीजें फाइंड आउट की हैं उनका भी रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। So now we talk about how you would deal with those interview nerves. So all it is, all there you could do is just feel relaxed. I know it's okay to feel nervous, okay, and they understand that too, because they are human beings just like you and me. They understand that you might be feeling a bit nervous, so वो इसको बहुत ज़्यादा seriously नहीं लेते, ठीक है, so they kind of let it go. Excuse me. Okay, so they do let it go, और आपने ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है that if you've made it this far, ठीक है, अगर आपके, क्योंकि ये सेकंड स्टेज है जो है इंटरव्यू प्रोसेस जो है, आपकी पहले सीवी और लेटर जो है जा चुका है, अगर उन्होंने आपको सिलेक्ट उसमें से कर लिया, इसका मतलब आपके अंदर कुछ तो उन्होंने देखा होगा, वो ऐसी रिक्वायरमेंट जो नेसेसरी उनके लिए थी, ठीक है, उन्होंने वो देखी होंगी आपके डॉक्यूमेंट्स में, तभी उन्होंने आपको सिलेक्ट किया कि आपको इंटरव्यू किया जाए। सो फील कॉन्फिडेंट कि ये आपके पास एटलीस्ट कुछ चांसेस तो हैं कि आपको ये जॉब मिले। सो यू जस्ट नीड टू स्टिक विद योर गन्स, और अपने आप को वही कॉन्फिडेंस देना कि इट्स ओके, वी आर वेरी क्लोज टू द सक्सेस बिकॉज वी मेड इट दिस फार। इसके अलावा ये बात कि what if I stutter, or if I come across any slip ups, या मुझे कोई क्वेश्चन उनका समझ नहीं आया हड़बड़ाहट में, so that's also okay if you do stumble a bit, okay, if you do come across any slip ups, that's normal, that's completely human. So what you need to do, okay, you just need to, agar samajh nahi aaye koi question, just ask them politely, pardon, can you repeat that please, ठीक है, उनसे आराम से क्वेश्चन रिपीट करने का बोले, वो रिपीट कर देंगे, बिकॉज उनका भी एम यही होता है कि they try to make each candidate feel very comfortable, ठीक है, वो यही चाहते हैं कि आप comfortably you go through this process और हर चीज successfully हो जाए, so they kind of try and help you with that, so it's okay अगर थोड़ा बहुत mumble कर दिया and all that, so just that's completely fine, or you can just say take a deep breath and take your time and just think about that question, or take a sip of water if you want, completely fine. इससे nervousness नहीं show हो रही होती, और अगर हो भी रही है, that's fine again, ठीक है, so just take your time before you answer any question. Okay, again which is try not to panic, ठीक है, just be yourself, try being natural really, सही। Okay, some of the skills जो कि employers देखना चाहते हैं, ठीक है, अपने क्या कहना चाहिए फ्यूचर एम्प्लॉई के अंदर, या जो कैंडिडेट जिनको जो है वो लोग कंसिडर कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू ट्राई एंड सी कि आपके अंदर ये चीजें हैं कि नहीं। सो द फर्स्ट थिंग इज अच्छा ये जो skills हैं, they try to जो कि जैसे communication वगैरह है, so they don't just want you to क्या verbally convey कर सकें, so वो चाहते हैं आपको written के अंदर भी ये सारी चीजें आए, ठीक है, जैसे communication है, not just verbal, आप written पे भी उनको काम दिया जाए आपको, so आप written emails वगैरह वो सारी चीजें भी लिख सकें।
सो और आपके पास ये कैपेबिलिटी हो कि आप क्लियरली अपनी बात दूसरों को समझा सकें, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, आप आराम से क्वेश्चंस वगैरह भी करें। इसके अलावा यू नीड अंडरस्टैंडिंग, सॉरी एक्सक्यूज मी, कम्युनिकेशन का दूसरा एस्पेक्ट इज दैट यू आर पेशेंट इनफ टू लिसन टू अदर पीपल एज वेल, ठीक है। बिकॉज कम्युनिकेशन कभी भी वन वे नहीं होती, क्या ठीक है आपने रिटन कम्युनिकेशन कर लिया, आपने वर्बल कम्युनिकेशन कर ली, एंड यू आर capable enough to talk in a clear tone and clear voice, and you're capable enough to convey the information appropriately, but at the same time you need to take in that information too very patiently. Agar koi bata raha hai, koi samjha raha hai, so you just wait for your turn, you let them finish, and then you talk. So they are looking for those. Second on my list is teamwork. ये जो पॉइंट्स में जो आपको बताती जा रही है, इफ यू वांट टू राइट देम डाउन यू कैन डू दैट, बिकॉज यही चीजें आप एक्चुअली सीवी पे भी लिखते हैं, ठीक है। अगर आपसे टीम वर्क के बारे में कोई सवाल किया जाए और समथिंग लाइक दैट, सो हाउ वुड यू डू इट, यही स्किल्स बिकॉज वो लोग ढूंढ रहे हैं, तो हम इन्हीं जो वर्ड्स हैं इनको अपनी सीवी के अंदर, कवर लेटर के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, और जब इंटरव्यू में भी आए तो ऑफ कोर्स हम प्रिपेयर करके आते हैं अपने सीवी और कवर लेटर से भी, सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज दीज देयर एज वेल। सही। सो इन टर्म्स ऑफ टीम वर्क दे लुकिंग फॉर कोई ऐसा बंदा जो पूरी टीम को जो है या किसी टीम मेंबर को सपोर्ट कर सके, मोटिवेट कर सके। अगर उसको भी कोई हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए, सो दे कैन सीक इट आउट, ठीक है। उन्हें कोई इस चीज में मसला नहीं है कि नहीं मैं क्यों मदद लूं और समथिंग लाइक दैट। दे नो देयर टीम, इफ दे नीड हेल्प दे comfortable enough के आके किसी से हेल्प मांग लें, एंड सिमिलरली दे comfortable enough कि किसी और को भी वो हेल्प दे सके, एंड दे वर्क फेयरली, ठीक है। बिकॉज टीम वर्क में अक्सर fights होते हैं, taking over the credits and things like that, so they should be able to work fairly and productively alongside other team members. Organization and time management, so here they want to see are you capable enough कि आप जो है objective set कर सकें, you can plan a strategy in order to achieve any goal, ठीक है। और आप prioritize कर सकते हैं task को कि नहीं, time के accordingly to meet deadlines, ठीक है। and how you are capable enough कि work life balance को manage कर सकें. In terms of problem solving, what you can say is like, you're able to understand information quickly and accurately, okay? And you can evaluate any plan for problem solving as well. Motivation, they want to see someone who's energetic, enthusiastic, they have desire to learn and develop, okay? And evaluate on performance as well, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे वरना पता चलेगा whether you've improved or not, सही। So that's really important. जो motivated लोग होते हैं वो देखना चाहते हैं if we've not done something up to the mark, then we are trying to achieve that, make it go above par really. इसके अलावा perseverance, कोई भी obstacle वगैरह आ जाए उसके लिए that's really important. You need to show leadership, ठीक है, that you have clear vision क्या चाहिए, आप टीम को support कर रहे हैं, you're able to listen, share, delegate appropriately according to your team's capabilities, and you are capable enough to take leadership into any project. Ideas, flexibility and openness to change, माने कि आपके पास different ideas हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसा idea है कि जो है आपको लगता है कि प्रोजेक्ट में डालना चाहिए, और if it's creative तो आप खुल के openly बात कर सकते हैं, और अगर कोई चीज change हो जाए तो आप you don't mind, you open enough to change. और वही confidence में भी दिखाना कि अगर कोई changes हुई हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप कुछ सजेस्ट करें ऐसी चीज या कोई ऐसी बात कि जो बाकी लोग इससे मुत्तफिक नहीं है, even then you feel confident कि कोई बात नहीं, if I think ऐसी चीज है then I'm going to put my point of view forward. So you need to show that confidence, जो कि बहुत ज़्यादा appreciate किया जाता है, ठीक है। But at the same time, confidence does not mean कि you be not courteous, so be courteous for us at least, just to show that you're not egoistic and stuff like that. Okay, interpersonal, intercultural and global awareness, ये उन लोगों के बहुत important है जो कि freelancing में जाना है,
अगर फ्रीलांसिंग में नहीं तो अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करें, देन अगेन बिकॉज वही बात है, हर एक का कल्चर डिफरेंट होता है, सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द डाइवर्सिटी। जैसे कि आपको पता है यूके अमेरिका में लाइक LGBTQ कम्युनिटी वगैरह, दे आर रियली बिग ऑन दैट, ठीक है, और इसको बहुत सपोर्ट किया जाता है। सो यू नीड टू मेक श्योर एंड कीप इन माइंड कि आपके तो किसी भी डाइवर्स कल्चर के लोगों के साथ या बैकग्राउंड के साथ आपको काम करना पड़ सकता है। एंड इफ यू शो, क्योंकि पाकिस्तानी को होता है ना, कोई भी ऑड वन आउट होता है उसको आंखें कर करके देखे हो तो look that person, that kind of thing. So don't create like a hullabaloo about it. Just be very calm, be very normal, और आपको पता होना चाहिए it's their cultural thing, or something who they are, so you feel completely normal about it. Numeracy, of course, without being, able to learn about stats, data, उसको कैसे पढ़ा जाता है, interpret कैसे करा जाता है, it's really important. IT, you need to have that confidence. अच्छा, IT का ये नहीं कि जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं खाली आपको वो बहुत अच्छे से आते हैं। IT का मतलब ये भी है कि आप ये विलिंगनेस शो करें कि अगर कोई न्यू ऐप है, कोई न्यू सॉफ्टवेयर, कोई ऐसी चीज़ है जो कि स्पेशली आपकी फील्ड के लिए आपकी कंपनी यूज करती है, और अगर मुझे करने की जरूरत है, दैट्स फाइन, आई एम केपेबल इनफ कि मैं आराम से उसको सीख सकती हूँ, बिकॉज आई एम comfortable working with IT and learn those things. So ये willingness show करना is really important IT के अंदर, because वही बात है, इसके अंदर चीजें चेंज होती रहती हैं, बहुत तेजी से चेंजेस आते हैं। So you need to know that. लिटरली इस पैंडेमिक के लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड का जो सिस्टम है जिसपे वो काम करते हैं, वो इंटरनली उनके ऑर्गेनाइजेशन का है, वो 3 बार चेंज हो चुका है, एंड he's been fine with that. So यही चीज होती है, जबकि बहुत से लोगों को बड़े मसले हो रहे थे। So you show that you're okay with it, okay? प्रोफेशनलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये वो चीज है जो आजकल बहुत कम पाई जाती है, बट ट्राई टू कीप अप टू इट, कि आप बताएं कि कस्टमर्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू यू, और यू बिलीव इन गिविंग देम हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस, एंड you are responsible enough that you know how to approach any matter. कोई मसला कोई कस्टमर कोई लेके आ जाए, you have the professionalism कि आप उसको कैसे डील करें, you know how to approach it. Okay. So with that being said, यहाँ पे किसी के कोई questions तो नहीं है, अगर हैं kindly जो है chat box में डाल दें, and I'll answer them all. Don't hesitate about any questions. Okay. Moving on. ठीक है कि what sort of questions मुझसे पूछे जाएंगे? Hold on a minute, guys. I've just got. Hold on, guys. Okay, so we were talking about what sort of questions they'll ask me, ठीक है? Of course, सबसे पहले वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहेंगे, आप who you are as a person, workplace के हिसाब से as a person, not in your personal life. But yeah, आपके skills, आपकी education, your abilities, your personal qualities, ठीक है? इसके अलावा वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपने खुद कितना रिसर्च किया है जॉब के बारे में, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप क्या जानते हैं, ठीक है? आपको जो रोल ऑफर किया जा रहा है उस रोल के बारे में क्या जानते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ठीक है? इसके अलावा आपकी मोटिवेशन क्या है, आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये अक्सर सवाल किया जाता है कि व्हाई डू यू थिंक आपको जॉब में रखा जाए, व्हाई डू यू थिंक you fit for this job or something like that. ये सारे क्वेश्चंस इसी एरिया के अराउंड आते हैं really. Your work preferences and interests, ठीक है? इसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस, सो इससे रिलेटेड मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, क्या क्या चीज़ आपने स्टडी करनी है, अगर आपने सब स्टडी किया होगा तो ये सब कुछ जो है बहुत ईजी हो जाएगा। कॉमनली जो आस्क क्वेश्चंस होते हैं वो यही होते हैं, जैसे कि अबाउट यू, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे बात की कि आपके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ होते हैं मोटिवेशनल क्वेश्चंस, कुछ होते हैं कॉम्पिटेंसी जो है बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी सॉरी मम्बल देयर अ बिट, कुछ स्ट्रेंथ बेस्ड होते हैं और कुछ जजमेंट बेस्ड होते हैं। ओके, सो ये जो है आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे आ रहे हैं, ठीक है? ये जो है हमारे पास मोटिवेशनल जो है क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इनको डिज़ाइन क्यों किया गया होता है, इनको सारा वो करने का मकसद यही है कि चेक किया जाए कि आप जॉब के लिए कितने ज़्यादा सीरियस हैं और आपने कितना ज़्यादा जो है
इसके लिए रिसर्च की है या प्रिपेयर किया है अपने आप को इस जॉब के लिए, ठीक है। आपने क्या कुछ जानते हैं आप इस रोल के बारे में या इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये सारी चीजें आपसे जो है वो जानना चाहते हैं, इसलिए आपसे इसी किस्म के क्वेश्चन करेंगे कि व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, या व्हाट डू यू नो अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, या आपको क्यों लगता है कि आपको ये अप्लाई करना चाहिए या हम इंटरेस्टिंग हैं, व्हाई। इसके अलावा what do you think will be the main challenge of this job, and what aspects of job do you find most interesting, ठीक है, ये चीज भी पूछी जाती है। इसके अलावा ये चीजें कि प्रीवियस काम में आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगी, और कुछ लोग ये भी पूछ लेते हैं प्रीवियस काम में आपको क्या क्या मसले मसाइल थे, क्या हर्डल्स बेयर करने पड़े, क्या प्रॉब्लम्स आए एंड स्टफ लाइक दैट। तो कोशिश करें कि ना ही बताएं, बस ये बोला कि प्रीवियस जॉब में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लिटरली नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, बट आई वांट टू ट्राई, I'm motivated because motivational questions होते हैं, so हमें यही शो करना होता है कि लोग previous job में भी कोई मसला नहीं था, but I'm really motivated to move my career ahead. I'm really motivated to just take the next step on the ladder. You just show that. इसके अलावा about any current news, कोई भी आपने that has caught your attention and why it interests you. So वही बात कि अगर कोई भी न्यू चीज पब्लिकेशन वगैरह कोई चीज पता चली उनके बारे में, you are aware of it, ठीक है। इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने का यही तरीका है कि आप अपने आप से खुद पूछें कि ठीक है इस रोल के अंदर क्या ऐसी होंगी जो मेन ड्यूटीज मेरी होंगी, ठीक है, उन सब में से मुझे क्या सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके अलावा आपने अगर उनके वैल्यूज और उनके कल्चर जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का था, अगर वो आपने स्टडी सही से किया है, देन ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू इजीली आंसर दीज क्वेश्चंस एज वेल। ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर वो देखना यही चाह रहे हैं कि मोटिवेशन कितनी है। सो जो भी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर आपने उनको पहले से रिसर्च करके रखा हुआ है, देन यू कुड से आई एम सो मोटिवेटेड कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, डेवलप माई skills furthermore into this field. हुज़ैफ़ा सिमिलर ही क्वेश्चंस किए जाते हैं, बट अगर आपसे इंटर्नशिप वगैरह के लिए या यूनिवर्सिटीज़ में भी जो लिए जाते हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए भी, ठीक है, उनके अंदर भी सिमिलर क्वेश्चंस किए जाएंगे, लाइक आप क्या जानते हैं हमारी कंपनी के बारे में, ठीक है, क्यों करना चाहते हैं इंटर्नशिप, आप ही को क्यों मिले, व्हाई ये, या आपने हमें ही चूज किया, लाइक हमारे साथ क्यों इंटर्नशिप करना चाहते हैं, सेम क्वेश्चंस, ठीक है। सो whether it's वही बात की कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप इंटर्नशिप ले जा रहे हैं, चाहे किसी PhD वगैरह के लिए जब इंटरव्यूज देने जाते हैं, उसमें तो वही बात है, आपको पहले तो अपने सब्जेक्ट अच्छे से पता होना चाहिए जिस जॉब या जिस रोल के लिए जा रहे हैं, ठीक। लाइक तो मैं इंजीनियरिंग के लिए जा रही हूँ, तो मुझे एटलीस्ट जो भी उनकी टर्मिनोलॉजीज होती है, भाई फला चीज उसकी डेफिनेशन ये है वो बेसिक मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि एकेडमिक क्वेश्चंस भी उसमें पूछे जा सकते हैं और पूछते हैं बहुत से लोग, ठीक है। इसके अलावा वो चीज़ के पहले से माइंड तैयार रखें अपने आप के अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या सबसे डिफिकल्ट या बहुत चैलेंजिंग चीज़ लगी है, तो ये बोलेंगे नहीं कुछ डिफिकल्ट तो इस जॉब में नहीं लगा एज सच। सॉरी गाइस, मुझे छींकें आ रही हैं बिकॉज ठंड बढ़ गई है यहाँ पे, सो अपॉलजीज फॉर दैट, ठीक है। सो ये वो लोग पूछेंगे कि क्या सबसे ज्यादा एस्पेक्ट आपके लिए चैलेंजिंग है, सो जिससे कि मुझे मुश्किल ऐसे कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, बट या थिंग्स कुड बी अ बिट चैलेंजिंग, तो मुझे ये चीज थोड़ी सी जो है चैलेंजिंग लगती है, ठीक है। यस हम दिया अगर ले जाएं एक एक कॉपी हर चीज की तो अच्छी चीज है, अगर आप ओरिजिनल फाइल्स ना भी ले जाना चाहें अपनी डॉक्यूमेंटेशन की, दैट्स ओके, यू जस्ट कैरी एटलीस्ट एक एक कॉपी हर चीज की, ठीक है। और वही बात है जो अगर रीसेंट न्यूज और पब्लिकेशंस का अगर आपने स्टडी किया होगा तो देन ऑफ कोर्स यू बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इजीली। ओके, अब हम सेकंड किस्म के क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई बात पूछनी है, जस्ट फील फ्री टू पॉप दैट इन द चैट बॉक्स प्लीज। अच्छा, कॉम्पिटेंसी के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है, आपकी क्वालिटीज क्या हैं जो उनको रिक्वायर्ड थी इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है। सो वो आपके अंदर है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे असल चीज होती है हम यूज करें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए।
स्टार सिचुएशन, ठीक है। स्टार एक मेथडोलॉजी है जिसको कहा जाता है सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। ये अगर हम यूज करें तो जो है आराम से इस फेज से गुजर के जा सकते हैं, ठीक है। स्टार मैं क्वेश्चंस बाद में एग्जांपल्स कुछ देती हूँ आपको, पहले मैं बता दूं स्टार होता क्या है मेथड, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि जब मुझसे कोई सवाल पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, आपने कैसे किया। फॉर एग्जांपल किसी कोई प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, हम डेडलाइंस बहुत करीब थी और ऑर्डर अभी तक तैयार नहीं था, सो ऐसी कोई सिचुएशन आपके आई तो आप कैसे करेंगे। आई वुड से लाइक सिचुएशन ये थी कि जो है मेरे पास इतने ऑर्डर्स थे, ठीक है। जैसे टीम वर्क की एग्जांपल एक तरफ मांगी जाए तो भाई बहुत ज्यादा काम था हमारे पास, ठीक है। हम शॉर्ट स्टाफ थे, तो टास्क मैंने क्या किया, टास्क मैंने ये किया कि उनके लिए मे बी जो है वीकेंड के लिए ओवर टाइम अप्रूव करवा लिया मैनेजर से। जब वो हो गया तो हमारी वही शॉर्ट स्टाफ टीम वो 2 हफ्ते तक लिटरली बस उन्हें वीकेंड्स पे एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, उनके उन्हें ओवर टाइम पे भी मिली है। बट एटलीस्ट इस टास्क से, इस एक्शन से फिर क्या हुआ कि एटलीस्ट हम लोग ऑर्डर कंप्लीट कर पाए, और रिजल्ट ये था कि जितना रेवेन्यू कंपनी को आया उस ऑर्डर की कंप्लीशन से, ठीक है, उसमें से लिटरली उनके वो बोनसेस या एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स के लिए पे करना कोई बड़ी बात नहीं थी। सो वी एक्चुअली उनकी पे निकालने के बाद भी हमने बहुत ज्यादा प्रॉफिट या रेवेन्यू अर्न किया। सो दैट वुड बी द रिजल्ट। सो आप पहले पूरी सिचुएशन बताते हैं, फिर टास्क क्या था वो बताते हैं कि आपने करना क्या था, लाइक डेडलाइन मीट करनी थी, ऑर्डर कंप्लीट करना था विद इन दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। फिर एक्शन आपने क्या किया उसके लिए, ठीक है। सो वी व्हाट वी डिड, वी डेमोन्स्ट्रेटेड, here I demonstrated I worked as a teamwork, motivated by team. So इसके अलावा I showed leadership. So ये सारी चीजें जो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, सो बहुत सारी चीजें एक एग्जांपल से शो हो जाती हैं। एंड इन दी एंड हर चीज का रिजल्ट बताना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यस मिस राइवल प्रिंस, मिस और मिसेस whoever है, sorry, but yeah, यही मैं क्वेश्चन ऊपर कवर करके आ चुकी हूँ, that they ask you, why we should hire you। ये जो है मोटिवेशनल क्वेश्चन होता है, if you don't mind me jumping back, ठीक है। वही चीज के why do you want this job या why should we hire you, वही बात है कि आपको हमारे साथ काम क्यों करना है या हम आपको क्यों रख लें। सो ये मोटिवेशनल क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स आप इसी तरीके से दे सकते हैं कि by showing that motivation that you know about them, you know about their values, their culture, you know what the job role is. Okay, so you know everything inside out about them, and you are willing to, train, learn, develop. You are not scared of any challenges, even if there are certain areas of the job में challenging है, but you're still good to take on them really. Okay. Okay, so what I was saying, so star ये जो मेथड है इसको जरूर यूज करा करें, ठीक है, क्योंकि आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, टीम वर्क से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग। आपसे पूछा जाए कि इनमें से कोई एग्जांपल दें, कोई ऐसा वक्त बताएं, ठीक है, जब आपने टाइम मैनेजमेंट का मुजाहरा किया हो, या जब आपने कोई प्लानिंग की हो, कैसे की, क्या, तो आपने पूरे कहानी के तौर पे इसका जवाब दिया जाता है, ठीक है। कोशिश करें कि कहानी सच्ची ही हो, अगर नहीं है तो थोड़ा सा इस जगह पे थोड़ा सा ऐड ऑन किया जा सकता है, पर एटलीस्ट अपनी जॉब से रिलेटेड ही हो, क्लोज टू इट, तो चल जाता है काम। क्वेश्चंस आपसे जो है अब मैं बताऊं इसके इस तरीके से किए जा सकते हैं कि कोई एग्जांपल दें जब आपने जो है पूरी टीम के साथ कोई टास्क कंप्लीट करा, ठीक है, उसमें आपका रोल क्या था, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो अब आप पूरी कहानी की तरह बताएंगे और दिमाग के अंदर जो है हम वो एक स्टार सिचुएशन रखेंगे, इसी तरीके से चलेंगे। पहले बताएंगे सिचुएशन क्या थी, फिर बताएंगे हमें करना क्या था उस टाइम के अंदर, ठीक है, और फिर वही बात कि हमने किया क्या और एंड रिजल्ट क्या निकला, वो हमेशा पॉजिटिव ही रखा करें, नेगेटिव कभी ना रखा करें, ठीक है। सो वही बात कि आपने इंप्रेशन पे क्रिएट करना है जो कि एक पॉजिटिव रिजल्ट से ही आने वाला है। They could ask you, tell us about a situation where you've had to overcome a difficult problem. कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, अब आप you don't really know क्या किया जाए, so how you brainstormed it, हो सकता है आपने टीम वर्क का मुजाहरा किया, then you did some planning, तो वो सारी चीजें आपने स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट माइंड में रखते हुए ब्रेक डाउन करना अपनी स्टोरी को और फिर बतानी होती है वो कहानी।
हो सकता है पूछा जाए आपने कोई ऐसी बात बताया जहाँ पे आपको जो है डेडलाइन करनी पड़ गई हो, ठीक है, या जहाँ पे ऑर्डर की एक्यूरेसी ठीक नहीं थी, या कोई ऐसी बात जहाँ पे आप ऐसे कस्टमर या ऐसे बंदे के पास आ गए जहाँ वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा था, कम्युनिकेशन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी, आप बता नहीं पा रहे थे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड सही से नहीं कर पा रहे थे, तो फिर आपने क्या किया, कैसे उसको इजी टू अंडरस्टैंड वे में आपने उस बंदे से कम्युनिकेट किया। या अक्सर जैसे पूछा जाता है जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा कस्टमर से फेस टू फेस अगर आपकी इंटरेक्शन है तो वहाँ पूछा जाता है फला फला किस्म के कस्टमर आ गए, जो रेडी गुस्से होते हैं, हाइपर होते हैं, इस किस्म के होते हैं, तो आप कैसे डील करेंगे। हो सकता है वो आपको कोई ना कोई सिचुएशन खुद से दें जो कि इस जॉब से रिलेटेड हो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, और वो यही देखना चाह रहे हैं कि आप उस डील को, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं। यहाँ पे अक्सर लोग जो हैं आपसे इस उसमें जो है प्रैक्टिकल काम भी करवा लेते हैं। ठीक है, आपसे प्रैक्टिकल भी काम भी करा लिया जाएगा, एक क्विक इफ यू आर ग्राफिक डिजाइनर फॉर एग्जांपल, तो क्विकली कि जल्दी से डिजाइन करके बताएं कि अगर फला फला कंपनी है या फला फला कोई पोस्टर है, आप कैसे डिजाइन करेंगे या आपका क्या आइडिया होगा। सो मे बी अ रफ स्केच और समथिंग, or maybe a quick design, look, I would put this here, or I would put model here, I would put the typography here, something like that. एक बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं, पर एक रफ आइडिया देना होता है ताकि उन्हें पता हो आप काम हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। सही। Okay, this brings us to our strength based questions. स्ट्रेंथ बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये ऑफ कोर्स इसलिए डेवलप करे जाते हैं कि आपसे पूछा जाए कि आप क्या करना आपको लिटरली पसंद है, आप किस एरिया में वीक हैं। अक्सर लोग इस तरीके से पूछते हैं स्ट्रेंथ बेस्ड क्वेश्चन को उल्टा घुमा के, आपकी वीकनेसेस क्या है। ठीक है, कुछ लोग पूछ लेते हैं आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, इट्स वन और द अदर, इसी तरीके से पूछा जाता है, या तो ऑपोजिट वे में घुमा के पूछ लेंगे कि वीकनेसेस क्या है, या फिर आपसे स्ट्रेंथ पूछी जाएगी। इन क्वेश्चंस का आंसर देने का एक गुड वे बताऊं तो वो ये है कि यू ट्राई टू बी रियली ओपन एंड ऑनेस्ट। ठीक है, आपने बहुत ज्यादा कहानियां इसमें नहीं बनानी, सो जस्ट ट्राई टू बी रियली ओपन एंड ऑनेस्ट, तो आप आराम से इनके आंसर दे सकते हैं। अक्सर लोगों से पूछा जाता है कि आप किस चीज को वो समझते हैं कि एक गुड डे है। मे बी आप कह सकते हैं कि कि आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिफिकल्ट जॉब या कोई डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, अगर मैंने टाइम पे कंप्लीट कर लिया है तो यू नो आई मेजर उस सक्सेस को भी एज अ गुड डे, या फिर मैं हर अपनी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करती हूँ, एंड आई बिकॉज आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, सो आई सेलिब्रेट एवरी लिटिल सक्सेस एंड आई कंसिडर इट अ गुड डे। या फिर पूछा जा सकता है कि आपके नजर में एक प्रोडक्टिव डे क्या होता है। ठीक है, आई कुड से लुक एज जो दिन का टू डू लिस्ट थी मेरी, अगर वो मैंने काम ऑन टाइम अचीव कर लिया ऑन द सेम डे एंड नथिंग इज पेंडिंग फॉर द नेक्स्ट डे, मे बी दैट्स माय प्रोडक्टिव डे मेरी नजर में। ठीक है, आपका कुछ और नजरिया हो सकता है। ठीक है, आपका जो नजरिया है उस बारे में आप वो बता दें। ठीक है, कोई इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट कम्स नेचुरली टू यू, कोई ऐसे इंटरेस्ट जो आउटसाइड ऑफ वर्क है। ठीक है, सो यू कुड से, अगर आपसे पूछे युवा वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ एज अ गुड लिसनर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आई एम अ रियली गुड लिसनर, और मैं अच्छे से बात सुनती हूँ, समझती हूँ, या आई कम्युनिकेट रियली वेल विद पीपल, या कम्युनिकेशन मेरा स्ट्रेंथ है, तो लोग पूछेंगे कि अच्छा आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ है, तो आप क्यों कह रही हैं कि आपकी स्ट्रेंथ है। मैं बोलती हूँ, कह सकती हूँ आई एम अ गुड लिसनर। ठीक है, जो भी डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है, और मैं तहम्मुल से उनकी बात सुन सकती हूँ, इवन तो अगर मुझे 100% समझ ना आए, उनकी साइड जो बॉडी लैंग्वेज होती है या वो इशारे से किस तरह भी समझा रहे होते हैं, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैम। ठीक है, सो आई कैन से just because I'm able to interpret their signs they're giving me, and just patiently trying to understand them, इस वजह से I can say I'm a really good communicator with people. I communicate really well. ठीक है, so they could ask you, like what have you done that you are most proud of. ठीक है, सो वही बात है कि ट्राई टू गो समथिंग जो कि वर्क रिलेटेड हो। अपनी लाइफ में ये ना कहेगा ओ मेरा बच्चा जब फर्स्ट आया था आई फेल्ट रियली रियली प्राउड, या मम्स डू दैट, बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हैं, बट बात है कि यहाँ पे सिर्फ एक्सक्यूज मी, सॉरी गाइस, मुझे छींके लग गई है बिकॉज
ठंड की वजह से यहाँ पे, apologies for that. Okay, so what you would do, you would say from your work life कि particularly कब आपने proud feel किया. मैं कह सकती हूँ कि जब मैंने अपने customer services use किए और out of the way जाके किसी बंदे को help करी, ठीक है, maybe हमारे पास कोई stock नहीं था, but I spoke to my manager और हमने specially कोई चीज़ उस बंदे के लिए order करी, and I felt really proud that I was able to help that person. और वही कह सकते हैं कि ये proud moments मेरी लाइफ में बहुत आते हैं, because I feel happy, I feel proud and content जब मैं किसी की help कर देती हूँ. So or maybe your coworker or your team member was feeling really low in their life. They had so many maybe personal life issues, and you just sat there and listened to them, just had a cup of tea with them, and after an hour-long conversation, वो बंदा just felt like there's a burden off his chest, और मुझे thank you कर रहा था, like at least कोई तो मेरे पास बैठ के सुना, and I felt really proud that I was able to help someone. So it could be very small everyday moment, but work life में से, ठीक है, नॉट पर्सनल लाइफ में से. सो आप वो उधर बता सकते हैं और उनको शोकेस कर सकते हैं कि दिस इज आई केम अक्रॉस वर्क लाइफ में एंड आई फील रियली गुड अबाउट इट, ठीक है. सो इट डजंट हैव टू बी रियली हाई फाई थिंग, just be very very simple here. Okay, अच्छा, judgment के questions. Oh sorry, here we are. अच्छा, यहाँ मैंने ज़्यादा नहीं कुछ लिखा, that's because मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगी इस बारे में, ठीक है. So judgment based and unexpected questions, ये क्या होते हैं? बात हुई है कि थ्रू आउट जब आपसे इतना कुछ पूछ रहे हैं तो वो वैसे भी इंटरव्यू में आपको जज तो कर ही रहे हैं, बट वही बात है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिकली वही बात की कोई ऐसी चीज दे दें जैसे कॉम्पिटेंसी के ऊपर, या अगर कोई ऐसा प्रैक्टिकल चीज या कोई ऐसा टास्क अगर स्पेसिफिकली दे दें जिसके बेस पे वो आपकी स्किल को या आपने जो कुछ लिखा है सी में, ठीक है, या जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड है वो चीज वो स्पेसिफिकली उस एरिया को जज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. अब वो कुछ भी हो सकता है आपकी जॉब से रिलेटेड, ठीक है. सो जस्ट टू राइट देम डाउन, आई डोंट नो इफ इट वुड बी फेयर कि मैं बोलूं भाई ये क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज इट कुड बी एनीथिंग. फॉर एग्जांपल अक्सर पूछा जाता है, लाइक नॉट अक्सर, आपसे कभी पूछा जाए लाइक हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन द फ्यूचर, ठीक है, ये पूछे जाते हैं सवाल अक्सर. या फिर इमेजिन करें अपने आप को आप फला जगह पे हैं, ठीक है, और ऐसा हो गया, या कोई आप इवेंट प्लान कर रहे हैं और इस तरीके से हो गया, अब आप क्या करेंगे. सो वो आपकी देखना चाहते हैं प्लानिंग स्किल्स के, आप इवेंट प्लान तो कर रहे थे बट एट द सेम टाइम समथिंग हैपेंड, हाउ यू वर एबल टू प्रॉब्लम सॉल्व और टैकल दोस थिंग्स, क्योंकि वो चीजें ये होती हैं जो जॉब की रिक्वायरमेंट होती हैं, अक्सर आपको जो है उनको फेस करना पड़ता है, ठीक है. सो आई वुड लाइक यू गाइस टू टाइप इन द चैट बॉक्स के आपने किस जॉब इंटरव्यू के लिए या कौन से जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का या टास्क का सामना करना पड़ा आप लोगों को, ठीक है. इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वही बात है कि काफी फजूल होते हैं अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो बट बात वही है कि पहले इन क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस के लिए ये चीज़ है कि अपने दिमाग में जो है थोड़ा सा हम इनको वो करते हैं, क्या कहना चाहिए, kind of analyze करते हैं what we're about to say, ठीक है. So we kind of put our own experiences के अंदर कि हम अगर इस जगह पे होते तो क्या होता. So you need to imagine a little bit as well, ठीक है, before you say कि हाँ ये होता, बट अपने आंसर को एक क्लियर सम अप जरूर करें. वही चीज अगर चाहे तो स्टार वाली चीज भी यहाँ यूज कर सकते हैं कि if I were this that, तो सम अप करना then I would do this in the end, एक कंक्लूजन अपनी बात का. It's really important. अनएक्सपेक्टेड कुछ लोगों को इस किस्म के सवाल आए हैं जो मैंने रिसर्च करे और मुझे लोगों ने बताए हैं, ठीक है. दे वर लाइक के उनसे पूछा गया कि अगर आप एक आइलैंड पे अकेले हैं और इतना पानी और खाना है कि सिर्फ इतने फला दिन खाली रह सकते हैं, तो आप क्या 3 चीजें चूज करेंगे खाने के लिए या पीने के लिए. तो इस तरह की चीजें, या ये तक पूछा गया एक लड़की से कि जो है अगर आप फल होती तो आप कौन सा फल होती. Okay, I've got in the chat saying कि अगर आपको
इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ से तो क्या आप लीव कर देंगी? अच्छा, ये सवाल पूछा जाता है और ये ट्रिक क्वेश्चन के वो ये अनएक्सपेक्टेड होता है लोगों के लिए, बट ये वही बात है, ट्रिक करने के लिए पूछा जाता है कि आप क्या छोड़ देंगे, क्या चले जाएंगे? सो यहाँ पे इंसान फंस जाता है, क्या बोले कि हाँ अगर बेटर अपॉर्चुनिटी आई तो मैं चला जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही लगा रहूंगा, तो वो भी कम्प्लीटली झूठ होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं खाना डिप्लोमेटिकली कि अगर मुझे लर्न करने का शौक है, आई एम वेरी मोटिवेटेड टू मूव अहेड इन माय करियर, सो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन में मुझे इतनी लर्निंग और ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज मिले दैट मैं कभी भी ना छोड़ के जाऊँ। आई वांट टू स्टे हियर परमानेंटली, एज लॉन्ग एज आई कीप learning new things, I keep growing, मैं अपनी ग्रोथ को नहीं रोकना चाहता, something like that। ठीक है, सो उन्हें पता होगा that you are willing to learn more, you are willing to grow more, you are very enthusiastic for your career। एक बंदे से ये पूछा गया था कि अगर आप एलियन होते और अर्थ में आ चुके होते तो क्या 3 इश्यूज हैं जो आप जो है रिजॉल्व कर लेते? ठीक है, कि अगर आपके ऐसी नहीं पावर होती, सो देखने के लिए कि उनकी माइंड फ्रेम क्या है। ठीक है, सो दे आर ट्राइंग टू पीक इनटू योर हेड काइंड ऑफ इट। अगर आपको 20 मिलियन मिल जाए तो पैसे कहाँ पे खर्च करेंगे? सो दे काइंड ऑफ वेरी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और कुछ लोगों से एंड में इंटरव्यू के ये भी पूछा जाता है कि आप इस इंटरव्यू को क्या रेट देंगे, 10 में से बताएं कितना रेट देंगे और इस तरह की चीजें। तो बात वही होती है कि इन क्वेश्चंस को आंसर हमें जो है पॉजिटिविटी की तरफ देना पड़ता है कि कहीं नेगेटिव में सम अप ना हो। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आपसे पूछा आप कौन से फल होंगे, तो यू कुड बी जस्ट से लाइक मैं ऑरेंज पर होना पसंद करूंगा क्योंकि मुझे ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, एक तो वो स्टैंड आउट करते हैं। ठीक है, और आप फिर अपनी कोई कहानी डाल सकते हैं कि फला फला टीम मेरी फेवरेट फुटबॉल टीम है, उसकी फुटबॉल का कलर ऑरेंज होता है, सो आई वुड लाइक टू बी एन ऑरेंज। ठीक है, इस तरीके से बात कर सकते हैं। या फिर उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो वही बात है कि हर इंसान के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं दैट यू वांट टू अनकवर एंड डिस्कवर। तो वो चीजें कि मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी है, आई डिस्कवर एवरीथिंग फ्रॉम विद इन। सो यू जस्ट मेक योर आंसर्स अप थोड़ा बहुत, यू कैन से ओके। नाउ एट द लास्ट पेज कि अब आप क्या क्वेश्चंस करेंगे अपने इंटरव्यूअर से? ठीक है, कुछ यहाँ पे मुझे आइडियाज दें अगर किसी के पास कोई आइडिया है। आप लोगों ने भी कभी इंटरव्यूअर से कोई क्वेश्चन किया या सबने बोला नहीं बस कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है? ओके, चैट बॉक्स में लिखते हैं, नो वरीज। ठीक है, आई विल बी वर्किंग इन। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि व्हाट्स द मेन फंक्शन इस फला डिपार्टमेंट का जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, सो इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि कि मैंने आपकी वेबसाइट देखी है, I see on your website that you work with employees to develop individual training or development programs। वही बात है कि अगर आपने रिसर्च की होगी तो आप इस चीज को शोकेस करना ना भूलिएगा कि कौन सी चीज आपने कहाँ देखी। अगर आपने वेबसाइट पे देखी है तो आप पूछ सकते हैं कि कि could you please tell me more about कि क्या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मैंने कहा कि वो खुश होते हैं कि आप डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज जो भी हैं। ठीक है, या कोई न्यू सॉफ्टवेयर है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, तो आप पूछें कि ठीक है आप मुझे बताएं कि क्या चीज़ है जो आप चाहते हैं कि मैं अगर इम्प्रूव करूं तो मेरे चांसेस आपके साथ काम करने के बढ़ जाएं। तो उन्हें पता चलेगा कि आप जो है वाकई में उनके साथ काम करना चाहते हैं एंड यू आर विलिंग टू do whatever it takes कि आप उनके साथ काम करने को आपको मिले। ठीक है, इसके अलावा वही बात है कि बात की जैसे हुज़ैफा ने पूछा था कि अगर जो है मैं इंटर्नशिप के लिए जा रहा हूँ तो वही बात कि what sort of opportunities are there for me।
ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, कि जो कि मेरे स्पेसिफिकली मैं जैसे रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस वगैरह गेन कर सकूं व्हाइल आई एम स्टडीइंग सॉरी, ठीक है, ये पूछना जरूरी है। सैलरी के बारे में पूछ सकते हैं, पेंशन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, पेंशन के बारे में इज अ वेरी गुड थिंग, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। और अगर कोई स्पेसिफिक या कोई स्पेशल बेनिफिट्स वगैरह कोई ऑर्गेनाइजेशन देती है तो आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या है या क्या क्राइटेरिया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा अगर उनकी कोई लेटेस्ट वेंचर का कोई पता है, ठीक है, उसके बारे में सवालात करें। जैसे वही तो बताना ना कि हमने रिसर्च की है कि अगर हमने तो भाई न्यूज़पेपर में फला चीज़ पढ़ी थी आपके बारे में या फला चीज़ पढ़ी थी कि आप एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी कंपनी को यूरोप में या इधर उधर, तो उनसे पूछना कि कि ये क्या लॉन्ग टर्म आपका प्रोजेक्ट है, ये कोई शॉर्ट टर्म चीज़ है, ठीक है, और इससे एम्प्लॉइज के ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, कि उन्हें पता चले कि यू आर aware of what new things are coming into their organization, ठीक है। So इस तरह की चीजें पूछना बहुत अच्छी बात है rather than asking silly questions. So अगर किसी के कोई questions हैं guys तो feel free to ask me now, chat box में पूछ लें, ठीक है। और अपने अगर चाहें तो हमसे अपने भी शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंसेस या कोई ऐसे क्वेश्चंस जो ऑफ कोर्स यहाँ पे लिस्टेड नहीं थे, हर एक का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, फील फ्री टू आस्क मी दोस। जस्ट बिफोर आई साइन ऑफ, देयर इज a good news I want to tell you all is that we are doing all our courses on sale, which is like 25% off for Black Friday sales at the moment. अगर आप इसको avail करना चाहते हैं then you can just WhatsApp on this given number on the screen. इसके अलावा जो हमारे existing students हैं जो कि already level 1 में हैं मेरे साथ या फिर previous batches में से students हैं, so existing students के लिए ये special है कि उन्हें एक further discount मिल रहा है, ठीक है, which is कि level 2 के courses में अगर आना चाहें तो वो 3000 के ऊपर आ सकते हैं। लेवल 1 के जो है उसके ऊपर स्टिल मैं बता दूं 25% लगेगा। ऑफर ये नहीं है कि आपको लेवल 1 पे कुछ नहीं मिल रहा, बट लेवल 2 के लिए एक एक्स्ट्रा फर्दर डाउन ऑफर मिल रही है, स्पेशली जो है फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स। सो फील फ्री के इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें just so you could not miss on any opportunity और मजीद लर्निंग कर सकें, अपने आप को enhance कर सकें। Okay, any other questions guys? Chat box में लिखते हैं और raise your hands if you wanna speak to me, that's also completely fine. Okay, I've just got a couple more minutes guys. About your question Almaz, आप जो है अगर चाहें तो एडमिशन ले लें, इस नंबर पे कॉल कर लें, अपने पास नंबर नोट कर लें, व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैसेज करके आप फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकती हैं फ्रीलांसिंग के लिए भी, ठीक है। फ्रीलांसिंग मैं कंडक्ट नहीं करती हूँ, हमारी दूसरी ट्रेनर है, शी इज एन अमेजिंग ट्रेनर, शी इज गॉट tons and tons of knowledge. Should be able to guide you, help you in that course. She knows a lot more about freelancing than I do really.